Hello, Ganpat. Good evening. Sir, my camera will be off sometimes. Okay, and why is that, Atif? I am on the way, sir. I am going to home. Okay, all right. Okay, you can see that some people don't have a very good base right now, so they are struggling more with the structure we learned yesterday. There are lots of sentences. Look, that they can practice. Anish, when are you coming? Yeah, take a look. John Lennon had an unhappy childhood. His father left home when he was 5. His mother couldn't bring him up, so he lived with his Aunt Mimi until he was 19. When he was 17, his mother died in a car crash. His mother died in a car crash. He went to Quarry Bank High School in Liverpool. Simple sentence. Subject V2. Easy sentence. He met George Harrison and Paul McCartney. And in 1960, they started a band called the Beatles. The Beatles recorded first single. The Beatles recorded their first single, Love Me Do, in 1962. They became famous in 1963 when they played more than 200. Good evening, sir. Good evening, Saloni. Where were you yesterday? In Bhavi, sir. Where? In sister-in-law. Uh-huh. Your bhabhi was here in your room. No, sir. Then I you went to see your I went to see her. You went to see her. You went to see your bhabhi. Okay. Take a look how easy these sentences are. In 1964, they went to the United States for the first time and played on American television. Who played? इतना धीरे में ना Who played? John Lennon. John Lennon. John Lennon. The Beatles. The Beatles played on American television, right? Yeah, right. The Beatles stopped playing live concerts in 1966. The Beatles stopped playing live concerts in 1966. The Beatles stopped playing live concerts in 1966 because the audience made so much noise that nobody could hear the music. ये सब लाइंस एकदम हिंदी में सब Yeah. एक दो स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रगल कर कुछ स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। अनीश, मेरे बच्चे, यस सर। आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है मेरे बच्चे, ठीक है? आप ना वर्ड्स को अरेंज नहीं कर पा रहे, सर ओके? सिर्फ 5 मिनट में लिख लेते सॉरी नहीं अभी नहीं, सोए हटा लीजिए, हटा लीजिए, हटा लीजिए, फिर से वापस लिख लीजिएगा। ये ज्यादा बेहतर होगा, इसको हटा लीजिए। ऐसा कभी मत करिएगा, इससे मैं कंसर्न करता हूँ आपकी परेशानी के बारे में। सारे लोग के सेंटेंसेस पढ़िए। द लास्ट वेडिंग आई अटेंडेड was last week. The last wedding I attended was last week. Lovely. बहुत अच्छा समीर। Take another. The last
time I bought a new phone was 1 year ago. Very nice. द की जगह आई लिख दो यहाँ पे समीर. I last went to college. Okay, yeah, the last time I went to college, the last time I went to college, the last time I went to college was 2 months ago. I waited for her, Ganpat. I waited for her until she came. बहुत बढ़िया sentence. Very good. I watched serials beta, Ganpat, not serial. I watched serials until I was 14. तो जब आप 14 के हुए, when you became 14, you stopped watching. Is that right, Ganpat? Yes, sir. I studied in Shishu school until I was 15. It means when you were 15, you stopped studying there. You left that school. Is that right? Yes, sir. Very good. I lived in Kolkata until I was 10. So when you were 10 years old, you left Kolkata. You stopped living in Kolkata, which is great. Good sentence. The last movie I watched in cinema was Gadar 2. The last IPL winner was Kolkata Knight Riders. Very good. The last college I studied in was Allama Iqbal College. Beta, the last college I studied in was Allama Iqbal College. The last college was Allama Iqbal College. The last college was Allama Iqbal College. The last college I studied in was Allama Iqbal College. The last girl I loved was Sony. क्या बात है, हिम्मत की दाद देनी होगी. सोनी के भाई ने वीडियो देखा, फिर आपकी सोनी मोनी सारी तोड़ी जाएगी. Okay, गणपत, the last girl you loved was, last को only कर दो तब बेटा. What, sir? लास्ट को क्या लिखना है? हाँ, only कर दे. लास्ट की जगह only कर दे तो मीनिंग बदल जाएगा ना. Yes, sir. क्या हो जाएगा मतलब? The only girl I loved was, Sony. एकमात्र लड़की जिससे मैंने प्यार किया वो सोनी थी. What Sony थी? The last time I drank apple juice. The last time I drank. I drank apple juice was 2 months ago. Where did you drink apple juice, Ganpat? Sir, in Patna, sir. What kind of apple juice was that? Was that alcoholic apple juice? Ganpat, was that alcoholic apple juice? Yes, sir. Alcoholic apple juice मतलब दारू था. No, sir. तो तुमने यस सर बोला alcoholic apple juice को. Sorry, sir. समझ के No, बोलो. no. मर्डर को यस बोल दोगे. Apple juice, where did you buy this apple juice? Sir, in Patna. Where? Sir, sir, Sampak Chak. Was it in a bottle? Was it in a carton? What was the apple juice in? What was the apple juice in? What was Glass. it? In a glass. Yeah. I want to drink. How much was it? 60 rupees. 60 rupees. One glass of Yeah. apple juice. Yes. Did you buy it fresh? It was fresh apple juice or it was a stored? I don't know, sir. Okay.
Did the shop sell other juices as well or only apple juice? Other juice as well. Was it a cart with mosambi and apples and other fruit? Did they have fruit on their Yeah. cart? Yes, sir. I like it. He drank original apple juice. Wow, I love apple juice. Okay. The last cricket match I played was in 3dec24 Stadium. Lovely, Ganpat. Well done. Yesterday, my friend's birthday, and I forgot. Then she stopped calling me. Very bad. ये सेंटेंस सही नहीं है. Yesterday, my friend's birthday. ये कैसा सेंटेंस हुआ? My friend's birthday. कल 14 तारीख, कल संडे था. बोलो बेटा. अंशु, Yes, sir. कल संडे था. Yesterday. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. मुश्किल है बोलना ये. No, sir. आज मंडे है. Today. It's Monday. अंशु, Today is Monday. आज मंडे है. Monday. Today is Monday. आज मेरा बर्थडे है. Today is my birthday. Today my birthday. ये क्या लिखा है? Yesterday my friend's birthday. कैसे हो गया? करेक्ट करो अंशु. Yesterday was my friend's birthday. Very good, Saloni. But Anshu should correct it. Anshu. Yesterday was my friend's birthday. And I forgot. Then she stopped calling me. हिंदी बोलना. कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और मैं भूल गई, तो वो मुझसे बात करना मुझे कॉल करना वो बंद कर दी. Oh my God. एक दिन में. What great friendship. चाइल्डहुड फ्रेंडशिप. Who? मुस्कान. Khan. Muskan. Is she from Bihar State? Yeah, from Bihar से. But now she live in Delhi. Married? No. She is a study. She Hmm. also study in DU. I see. What subject? BCom, same subject. Wow. Do you meet? Yeah. She go to other college. Yeah, I can understand. How often do you meet? Uh, I think 1 month ago Last time I met her, I met her was 1 the month last ago. time I met her was 1 month ago. 1 month ago. So, did you call her No. today? No. Why? I want to understand. You forgot to wish her on her birthday. Then obviously she was a little upset because you were her childhood friend and you didn't wish her. Then how did you know that she was But upset? I wish but late. You wished but I late. wished but You late, wished yeah. but late. Then what was Yeah. her reaction? What did she say? क्या बोली? She is fired to me. She is very annoyed with me. Means she is very annoyed with me. अर्चना, आवाज आ रहा बाहर जा. I think, Anshu, your friend doesn't have a boyfriend. I don't know. I can tell you,
She doesn't have a boyfriend. Why? Because if she had a boyfriend, she would not miss this. She would not feel very bad that you did not phone her. She would be busy with him. But I think she doesn't have a boyfriend. That's why she missed you more. And that's why she's annoyed. Maybe. Or maybe she really, really likes you and she was very heartbroken that her best friend Anshu did not call her. हाँ सर Did you say sorry? नो You जो ये said, खुद बोल रही हूँ सर वो hmm, मुझसे खुद बात करने लगेगी come again? वो मुझसे खुद बात करने लगेगी I वो know. बहुत अच्छी है Yeah, हाँ she's very nice. She या will call me. I know she will call me. Bolo, I know she will. आई नो शी विल कॉल मी When she is a little calm, when she calms down, she will call me. है ना? या जब वो शांत हो जाएगी तो कॉल करेगी. She's a little upset right now. I can understand. You have good friendship with her. One day my mom scolded me. Then I stopped talking to my mom for a few days. Wow. इट्स Okay. रियली सर It's really नहीं बेटा. It's true. It's really की जगह क्या बोलेंगे? इट्स ट्रू सर फॉर फ्यू डेज नहीं फॉर वीक सम टाइम Come again. सर but sometime I didn't talk to my mom for a week. For a week. Wow. Yeah. My God. Because she scolded you. Guys, I will not scold Anshu. She will stop talking to me for a month. If she can stop talking to her Sir, mom for a week, she sir, will I stop. know it's my sir. I know it's my bad habit, but I left this habit when I came to Delhi. I realized for my parents. Of course. Good. I got a phone. ये गड़बड़ हो गया बेटा. Come ये again, sir. ये गड़बड़ हो गया बेटा. आप कह रही हो दिल्ली आए तब पता चला कि इंग्लिश जरूरी है ना बेटा? दिल्ली आए तो पता चला कि आप ऐसे बोलोगे. आप पहले अनटिल और व्हेन दोनों नहीं बोल सकते. ठीक है. इसमें आपको दो में से एक चाहिए. अब व्हेन आई केम टू दिल्ली आई रियलाइज्ड इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी व्हेन आई केम टू दिल्ली. इसमें अनटिल क्यों चाहिए था? मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश बहुत जरूरी जब मैं दिल्ली आई तब तो अब आप आए अंटिल तो केम टू दिल्ली. हाँ When you came to Delhi, you realized how important English is. You realized English is very necessary when you came to Delhi, right? या ये बात सुन के मुझे अजीब लगता है. बचपन से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो और आपको एहसास नहीं होता कि इंग्लिश जरूरी है. वाओ. सर आई थिंक इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी in Bihar city, but I came to Delhi, so I realized ये तो मैं कह रहा because every people use Hindi in Bihar city, so हूँ. बट I यू आर नॉट. couldn't realize. बट आपको दिल्ली बिहार से में जिंदगी बितानी थी. I didn't know, sir. ओके. Actually, मत जाओ. द करेक्ट सेंटेंस इज देयर आर टू सेंटेंसेस दोस्तों. दो बात. ठीक है. आई रियलाइज इंग्लिश मार खा गई अब उसको. I realized English is very necessary when I came to Delhi. याद है? सही है? Sir, अच्छा बोलो. I could walk when I was one. पढ़े थे I ना ये could लाइन? walk पढ़े हो ये लाइन? पढ़े हो ना? I could walk when I was one. when I was one. Yeah.
I could walk when I was okay. One. कोई बोलेगा हम 2 साल में चलना हमको आ गया था. I could walk when I was 2. I could walk when I was 2. लेकिन अंशु को पता है चलने में ना बोलने में 4-5 साल लग गया था. क्या बेटा? 4-5 साल. हाँ हाँ. अंशु को बोलने में 4-5 साल लग गया था दोस्तों. बाकी हम लोग तो 1-2 साल में बोलने लग जाते हैं ना. वी कुड टॉक व्हेन वी वर 1 or 2 or 3, राइट. अंशु को 4-5 साल में बोलना आया. अंशु couldn't talk until she was 4, until she was 5. Until I was. लेकिन ये सेंटेंस ध्यान देना. अंटिल के साथ साथ सेंटेंस पे ध्यान दो. अंशु couldn't talk. अंशु couldn't talk until she was 4. अंशु couldn't talk until she was 4 or 5. 4-5 साल में आया उसको बात करना. लेकिन आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो. बात समझ में आ रही है? खाली ये बताने के लिए कि देर से आया. तो अगर आप ये बोलना चाहते थे अंशु बेटा कि हमको देर से रियलाइज हुआ कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो आप कह सकते थे आई डिडंट रियलाइज I didn't realize English was very necessary until until I came to Delhi. आप ये I came to समझो Delhi. बेटा अंशु. वही बात अलग अंदाज में. I didn't realize English was necessary until I came to Delhi. I didn't realize. है ना बेटा? इसका ये मतलब कि रियलाइज नहीं हुआ, देर से हुआ. इसका ये मतलब है देर से हुआ. I didn't realize English was very necessary until I came to Delhi. Famous. Yes, sir. सब लोग समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त में ये बात? Yes. Yes, sir. और when से तो बोल सकते हैं रियलाइज इंग्लिश वाज नेसेसरी व्हेन आई केम टू दिल्ली. लेकिन इसमें लेट नहीं पता चलता है कि देर से रियलाइज हुआ, ये नहीं पता चलता है. दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है दोस्तों, लेकिन उसका कहने का मतलब है कि हमको थोड़ा देर से रियलाइज हुआ. I also, sir. I as well. कैसे बोलेंगे मैम? I didn't realize English was necessary until I came to Ranchi. You know, Sayukta ma'am, my Yes, wife, sir. my wife was talking about perhaps you and another lady, another colleague who Yes, wanted to learn English. I think you had talked to my wife about it. अब बात Yes, ठीक- sir. Yes, sir. I always talk with Ruplakta ma'am in English, sir. Yes. And you Yes. you wanted to join. वो बोलती थी Sayukta ma'am wants to join. Sayukta ma'am wants to join. So Because Cambridge work is very hard, sir, and I have no enough time for doing extra activities, sir. yeah. I came at 4:30 o'clock. Then I fresh and take my lunch. Ma'am, 5 o'clock. past tense, Then ये past tense है ना? yes, I took my lunch at 5 o'clock. Then I am busy with my housework. Right. So You couldn't find time to join class. yes, sir. Yes, sir. I was getting too tired. Right. So Makes sense. तो बेटा अभी आप क्या बोलना चाहते हो कि मुझे ना, देखो बेटा दोनों वर्ड नहीं यूज करने का. पहले ये बात ध्यान रखने का, अनटिल और व्हेन में से एक ही से जोड़ना है. ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको समझना होगा दोस्तों, व्हेन से तो आप आसानी से बोलते हो ना. जब हम 11वीं क्लास में थी तो मुझे फोन मिल गया. आई गॉट अ फोन व्हेन आई वाज इन क्लास 11. ठीक है एवरीबॉडी, आई गॉट अ फोन. हाँ, I was in I got a phone 11. when I was in class 11. चलिए ठीक है, 11वीं क्लास में मिल गया. अगर ये कंप्लेन करेंगे, जानते हो हम 11वीं में थे ना तब मिला, तब आपको दूसरा तरीका बोलना पड़ेगा. I I didn't didn't get a phone until I get a was in phone class 11. until I was in class 11. I didn't realize the English is necessary until I was 16. समीर लिख लेना बेटा, अभी नहीं सुन रहे क्योंकि योर ऑडियो इज नॉट वेरी क्लियर, राइट? So please write it down and put it in the group, okay? The last conversation Prince with a friend was ये सेंटेंस का हिंदी बताना अंशु बेटा. Sir, yesterday Atif said a sentence. Uh, uh, so I wrote हिंदी क्या है बेटा इसका?
Wait. Uh, प्रिंस प्रिंस के फ्रेंड के साथ आखिरी कॉन्वर्सेशन प्रिंस अपने फ्रेंड के साथ 2 महीने पहले किया था। बहुत बढ़िया। तो एक सीधा आखिरी तरीका है, दो तरीके हैं बेटा, अंशु बेटा। एक सीधा सीधा रास्ता है, सब लोग सुनिएगा। आतिफ टॉक्ड टू प्रिंस 2 months ago। सीधा सीधा लाइन। आतिफ टॉक्ड टू प्रिंस कब? 2 months ago। बात खत्म। आतिफ टॉक्ड टू प्रिंस Prince 2 months 2 ago। months ago. So, एक होता है द लास्ट कॉन्वर्सेशन hello, आतिफ ये हैड, क्लास में राइट, द लास्ट कॉन्वर्सेशन आतिफ हैड विद प्रिंस। समझ रहे बेटा? द लास्ट कॉन्वर्सेशन आतिफ हैड विद प्रिंस। आखिरी had with प्रिंस। लास्ट कॉन्वर्सेशन आतिफ हैड विद प्रिंस, जो प्रिंस के साथ आतिफ ने करी थी, राइट, was 2 months ago। The last conversation Atif had with Prince was 2 months ago। बहुत बढ़िया, well done। देखो बेटा, the first and last time I abused a girl, ये यहाँ ये सब, the first and last time I abused a girl was because she flirted with me on Facebook। काशिफ, तुमसे एक लड़की ने फ्लर्ट किया तो तुमने उसको गाली दे दी। यस सर। उस बात पे तो सारी लड़कियां तुम्हें गाली देने लग जाएंगी, तुम फ्लर्ट करते हो उनसे तो। करेंगे तब ना सर। अरे झूठा। भाई बताओ, आदमी ऐसा हो सकता है जो फ्लर्ट ना करे? पहले बताओ, ऐसा आदमी हो सकता है? अब रिस्पेक्टफुल फ्लर्टिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल फ्लर्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम सेइंग। इज इट पॉसिबल? सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखेंगे और ईमानदारी से बात करेंगे कि आप भी इंसान हो। बताओ मुझे। एंड संयुक्ता मैम, आप मतलब हमारे एज में आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी समझदारी से बताइएगा। क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जो जवान हो, सुंदर लोगों से बात करो और उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स ना आए? ऐसा होता है? नहीं बात तो सर। करते हैं। हाँ, अलग बात है कि not possible। लिसन लिसन, रिश्ता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू माई गर्ल स्टूडेंट, ओके, देन आई विल नॉट फ्लर्ट विद हर बिकॉज शी इज माई स्टूडेंट, राइट। लेकिन अगर वो लड़की मेरी स्टूडेंट नहीं हो, मेरे से नॉर्मल बात करे, तो मैं एक दो बातें मजाक में नहीं बोलूंगा उसको। ऐसा हो सकता है? बट इट विल बी Yeah, रिस्पेक्टफुल, इट विल बी रिस्पेक्टफुल, इट विल बी रिस्पेक्टफुल। पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, आई एग्री, लेकिन some people are serious people, they don't talk like that, not with anybody, okay। लेकिन if somebody flirts, flirting मतलब again I said respectful flirting and disrespectful flirting, right? In one way you entertain them, you don't make them feel bad, you entertain them, you say something nice. I wrote today to somebody, your voice is beautiful, so that was also in a way a little bit flirtatious, okay। I wrote to somebody today, your voice is beautiful। तो क्या उसको मुझे पलट के गाली देनी चाहिए कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? तो भाई no। किधर आगे, किधर वो, किधर है वो, किधर है? Very Thank you। here, here। So a girl flirted with you, so you, नो पलटी मार देगा वो। how many people think it is all right to abuse somebody because they're flirting with you? If they're disrespecting you, of course you can. But if it is not disrespectful flirting, then why should you abuse people? You can simply say, I'm not interested. If you're not interested, everybody, please tell me, is that not too much of a reaction? Overreaction? Abusing somebody because they're flirting with you? Yeah, Kashif, a monkey cannot flirt with you. A buffalo cannot flirt with you. Only a human can flirt with you. And among those humans, some humans who are young and those are girls, they can flirt with you. Why would you abuse them if they said something nice to you? Flirting means, what do you think? Disrespectful or respectful? Because she name changed in on Facebook. So you want her to
show her real name and flirt with you? Yes, sir. देखो भाई सामने आ गई इस reality. He did not abuse her because she flirted. He He abused her flirted. because she was hiding her name and flirted with him. Okay? How did he get that चलो she is बढ़िया hiding कल्पना, her मेरी name? मेरी मेरी चाची पूछ रही हैं कि आपको कैसे पता चला कि she was hiding her name. Okay, thank you कल्पना. Yes, very good question. Yes, बताइए काशिफ. Yes, sir. How did you know that she hid her name? She was hiding her name. Because she wrote a sentence. I What? know. What? She is the same girl, and but That means name is changed. that means she was your ex or something another whom you Wow, know. कल्पना को तो डिटेक्टिव होना चाहिए था. क्या लॉजिक लगा? It means you already knew her. You already knew her. तुम पहले से जानते थे उसको. Yes, sir. She is my childhood friend. And then you abused her. And you still abused And her. Was she beautiful or not? अरे yes, छोड़, Boni. फ्लर्टिंग कर दी तो सुंदर रहे चाहे मत रहे. Atif? Well, let's end with this saying this much. Abusing somebody online for the reason that they flirted with you is absolutely unnecessary. And Kashif did not abuse her because she flirted. Kashif abused her because she was hiding her name. Okay. Did she accept when you abused her that she was the same girl? Did she accept a real identity? yes. Okay, Kashif. Fine. Well, what can I say? It's She wrote at the on ID. hmm. Why you abuse me? Some girls are very naughty, sir. You're right. In nowadays, sir. I think Atif needs to be ready with the barat and everything, you know. Kashif is soon going to get married. He is talking to a lot of girls, yeah? Childhood friend. Atif, did you know that your brother had a childhood female friend? अब मेरा तभी तो पूरा है. When he say her name, I don't know. But this much is enough, na, that your brother has a childhood friend, childhood female friend. So I think she will be the perfect bhabi because she has known him for all his life. So It's she will, not possible, sir. I think. oh, you know who the girl is. No, I don't know. But he say her name, so then I know her. Why do you think it is not possible? Why do you think Nobody's the child. His friend is unmarried. childhood friends are not married? All childhood friends are married. All childhood friends are married. It's funny. Both brothers are really entertaining. Okay. Like, all the childhood friends are married. No one is left. Yes, sir. This is true. Okay. Good. All right. Interesting. Okay. तो मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतने मॉडर्न लोग हैं. बचपन से दोस्ती है लड़कियों से इनकी. हाँ. Can you believe it? Okay. All right. Good for you. But you guys have done a good job here. अच्छा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना. The first time I met my director, he was English. We started talking to each other, and then he told me, I don't understand Hindi. I am not कहाँ से आ गया understand verb है. I don't understand Hindi. Can you speak English? When I was shocked because क्या ये क्या था? ये आखिरी सेंटेंस का मतलब काशिफ? आखिरी सेंटेंस क्या लिखा Because काशिफ? I spoke English. क्योंकि मैं इंग्लिश बोल रहा था. तो कौन शॉक में था? मैं अच्छा. क्योंकि मैं इंग्लिश बोल रहा था, उसको लग रहा था कि हिंदी बोल रहा वो. मैं ये क्या चल रहा है यार? What's going on? and he Moe, send moe. he send other person
he was South African guys. देखो I देखो देखो I guys, told same sentence. He understand, he but understood. yeah, but Okay, English person not understand. ये बात बहुत सीरियस भी है, बहुत फनी भी है. आशिफ was speaking English and his boss thought he was speaking Hindi. ठीक है, उसके बॉस ने कहा इंग्लिश में बात करो ना. बोल रहा अरे यार हम तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं. मन में इसको लगा अब क्या बोले इंग्लिश, इतनी देर से हम हिंदी थोड़ी बोल रहे थे. Okay, the point is, Kashif, when you talk to somebody in English and if your English is broken, okay, not very good, Yes, then other people who do not speak good English somehow understand you. But those people who speak good English, they will not understand you. Because your boss was English, he yeah. had problems understanding you. तो अभी भी आप गलत गलत बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे. मेहनत करिए. बीच में मेहनत करना रोक दिए हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, Yes. प्लीज कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. शबनम, वेयर आर यू? I don't know whether she will cook new recipe or not at dinner. Okay, for dinner ज़्यादा बढ़िया रहेगा. I'm not sure if my papa will give me permission for a trip. बहुत बढ़िया. I'm calling to ask if you will go for a picnic. बहुत बढ़िया. I'm calling to ask if you will share notebooks. Okay, good. बहुत अच्छी कोशिश है. Moni, you need to learn where did John went. ये कैसे हुआ? यहां देखना. Who did John live with? V1. Moni, who did John live with? Live, V1. तिकड़ी में V1 होता है. Moni, did subject V1. Did subject V1. Got it? Take a look here. How did his mother die? उसकी मां कैसे गुजर गई? How did his mother die? V1. तो आप बताओ. Number 3, where did John went or go to school? Go to school. Go to school. वो क्वेश्चन में Go go रहना है, राइट? आंसर में होगा he went to Corey Bank High School. Okay. Next, when did the Beatles start? Okay, when did they first play? Okay, why did they, ये गड़बड़ हो गया. Why did they stop playing live concerts? Why did they? Stop Stop. playing live Why concert. did they stop playing live? Okay. So good job, everyone. बहुत अच्छी कोशिश. Keep practicing, everyone. Okay. I also done yesterday before day, sir. I saw, ma'am. I saw your sentences on my WhatsApp. No, WhatsApp, no. I send in Telegram. This one. I think you sent me something on WhatsApp as well. So Shabnam Yeah. sent. Let me see. I will listen only. Yesterday before day. Are you here? So Shabnam is here already, actually. I didn't notice Shabnam is already here, guys. Shabnam, good practice. You're doing great, Shabnam. Okay, keep it up. Okay, Shabnam, there are some problem singular है, are plural है. So there are some problems or there is some problem in my mobile. Okay. Yes, sir. Last topic I was, ये माज आपने लिखा या उज़मा किसने लिखा है? Who's I am, sir. उज़मा आपने लिखा बेटा? चलिए. Yes, sir. ओके, चलिए देखते हैं. लेट्स सी. द लास्ट शॉपिंग. अच्छा, आप क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं ना, आप ऐसे खाली लिखा लास्ट शॉपिंग आई वाज 1 days ago. आपने किया कहाँ लिखा बेटा? जैसे अगर शॉपिंग की जगह लिख दो लास्ट चिकन, तो आई एट बोलना पड़ेगा ना. द लास्ट चिकन आई एट, ऐसा बोलना पड़ेगा ना. The first movie I watched was
लास्ट सेंटेंस करा जरा देखे उसमें। आखिरी मूवी, पहली मूवी जो मैंने देखी थी मेरी बहन के साथ देखी थी, ये कहना चाह रहे बेटा उस्मा। Yes, sir. तो इसका इंग्लिश ऐसे होगा, द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड वाज विद माय सिस्टर। द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड वाज विद माय सिस्टर। अच्छा कोई नहीं, ये सेंटेंस को गोली मारे ना, ये आगे भी हो जाएगा सही। बहुत सारे सेंटेंस है दोस्तों, टेक अ लुक एट दिस हियर। अरे इतनी देर से मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करी थी, ऐसे आई वाज जस्ट रीडिंग। ओके ओके, आई एम सॉरी। देखो यहाँ इतने सेंटेंसेस है दोस्तों। द बीटल्स स्टॉप्ड प्लेइंग लाइव कॉन्सर्ट्स। आप भी कुछ लाइन लिख दो। मेरी माँ ने पड़ोसी से बात करना बंद कर दिया जब उसने मेरे घर के सामने कूड़ा डाला। माई मदर स्टॉप टॉकिंग टू द नेबर व्हेन शी थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। है ना? इजी Yes. सेंटेंसेस। आपके लाइफ से जो भी बात रिलेटेड है प्लीज वही बताना। So the Beatles stopped playing live concerts in 1966. They stopped. They stopped what? Playing live concerts. Playing Live concerts मतलब होता है ना, परफॉर्म कर रहे हैं लोग, आके देख रहे हैं। Live concerts. Okay, they Live stopped. concerts. This is Why? Saregama. What was the reason? Because the audience made so much noise that nobody could hear the music. Because the audience made so much noise that nobody could hear the music. किसी को म्यूजिक सुनाई ही नहीं पड़ रहा था, इतना आवाज कर रहे थे लोग, हल्ला कर रहे थे। Was it a good thing or a bad thing? Bad thing, sir. Was it to show disrespect to the Beatles? Yes, sir. No. Yes. They were enjoying themselves, right? And that's why they made a noise. It was not disrespect, it was excitement. It was Excitement. Excitement. yeah. They were so excited that they made a lot of noise. So much noise that nobody could hear the music. So the Beatles stopped playing live concerts. But they continued to record songs. But they continued to record songs. Record songs. They did not stop. They did not stop to record recording. the song. Record the song. To record the song. गड़बड़ कर दिया दोस्तों, आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। ऊपर में पढ़ा आपने द To बीटल्स record. स्टॉप्ड क्या? द बीटल्स स्टॉप्ड क्या? Stop Playing live live concerts, sir. concerts. Live Playing live concerts. concerts, Playing right? live concerts, yes. But they continued to record songs. But they, Continue to record songs. it means they did not stop. Recording songs. Well done. यही सब चीज गौर करने का है, सीखने के लिए आंखों से। Everybody, your attention here. देखना, गौर से देखना। स्टॉप के बाद क्या लिखा है? प्लेइंग, आईएनजी वाला। ठीक है, तो जब आपने कहा दे कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सॉन्ग, तो मैंने कहा दे डिड नॉट स्टॉप, तो आपको क्या बोलना था? Recording song. दे डिड नॉट स्टॉप Recording song. Recording song. Continue रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स। यहाँ क्या Recording स्टॉप song. के बाद प्लेइंग है ना, तो स्टॉप के बाद आपको क्या? दे डिड नॉट स्टॉप। Recording song. Song. ठीक है, Recording song. सुनना, गौर सुनना। मैंने क्लास जाना बंद कर दिया लेकिन सीखना बंद नहीं किया। नाउ से दिस, आई स्टॉप्ड Stop I going stopped to the class. class. Going to class, The class but by I Not मैंने stop. बंद नहीं किया। But I didn't. But I didn't stop. learning English. stopped I learning. didn't stop ठीक है, But मैंने I did क्लास not जाना stop बंद नहीं learning किया लेकिन English. इंग्लिश सीखना बंद नहीं किया। ऑलराइट, मैंने उससे बातचीत बंद कर दी लेकिन उसको उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। राइट, I I stopped talking with him, but talking to him, but I didn't stop. I did not. didn't I did stop not I didn't stop thinking thinking about him. वेरी about गुड, वेरी गुड। यहाँ didn't stop की जगह couldn't stop कैसा रहेगा? I couldn't stop। Yeah, sir. I couldn't क्योंकि आप stop. अपने सोचना बंद नहीं किया या बंद नहीं हो पाया आपसे। आप समझ रहे हो ना? Yes, yes, sir. तो जरा फिर से बोलते हैं, I stopped talking to him or her, but I Stop. couldn't stop I couldn't, but I couldn't
Stop Uh, thinking about her. thinking about him. I hope you understand everybody. Yes, sir. Yep. आप ये सब चीजों को गौर करना शुरू कर दीजिए कि क्यों सही यहाँ पर है, क्योंकि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। ये किताब सिखाने के लिए है ना आपको, Hmm. ये स्टोरी सिखाने के लिए है ना। यहाँ देखिए, दे कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, दे कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, दे कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स। इट मीन्स दे डिड नॉट स्टॉप। Yes, sir. Recording song. यहाँ कोई अगर कुछ और बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लेइंग है तो हमें रिकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। बोलेंगे यहाँ टू रिकॉर्ड है, हाँ, क्योंकि उसके पहले क्या लिखा है, कंटिन्यूड। दे कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड सॉन्ग। अब बोलिए, मैं क्लास में जाना जारी रखा, मैंने क्लास में जाना जारी रखा, मैंने बंद नहीं किया। आई कंटिन्यूड I continued I attend continue the class. गो टू। To the class. Continued. Continued go to the class. I continued go to I class. continued go to the Go class. Go to the क्या class. कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? टू गो टू Continue to go to the class. to go to class. ओके। मैम बोलिए ना, Yes, sir. मैंने सीखना जारी रखा। आई कंटिन्यूड। Learning English, sir. यहाँ सामने से, सामने से To देखिए। learn. Continue I to learning. continued to learn continued English. learning I continued to learn English. Learn Learn English. उस्मा, उस्मा, I आप continued बोलो to कि learn English. मैंने जीन्स पहनना कंटिन्यू रखा, बंद नहीं किया। कैसे बोलेंगे? आई कंटिन्यूड। आगे काली I उस्मा, continued. I continued to Wear jeans. वेयर। wear jeans. बहुत Wear बढ़िया। jeans. अब बोलो कि मैंने जीन्स पहनना बंद नहीं किया। I didn't stop I didn't stop हाँ, wear to jeans. wearing jeans. Wearing jeans. यहाँ की वजह से, यहाँ की वजह से बेटा, यहाँ की वजह से। आई डिडंट स्टॉप वेयरिंग जीन्स। Wearing jeans. सब लोग गौर कर रहे हैं कि इस किताब आपके लिए क्यों है, इस किताब में लाइंस क्यों है, आपको गाइड करते हैं क्या, लाइन क्या बोलना है आपको सिखाते हैं। अंशु, हम लोगों ने फोन पे बात करना बंद कर दिया लेकिन टेक्स्ट पे बात करते रहे। अंशु, I अंशु, 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 ओनली अंशु, अंशु, ओनली अंशु। Yeah. Come again, sir. हम लोगों ने फोन पे बात, कॉल पे बात करना बंद कर दिया। We didn't. We didn't. Stop. Stop. स्टॉप पर भी We यूज कर लो, didn't स्टॉप stop. यूज कर लो अंशु, स्टॉप यूज कर लो। हम लोगों ने फोन पे बात करना बंद कर दिया। We didn't We stop didn't stop I talking. Talking to. थोड़ा नर्वस ना हो ना। वी स्टॉप टॉकिंग, वी स्टॉप We stopped Talking on phone talking. calls. ऑन द फोन कॉल्स। सर आप इससे पिछले एक सेंटेंस बोले थे ना, आई लर्निंग But we didn't stop chatting. नहीं, इंग्लिश कुछ करके इससे पहले आप एक सेंटेंस बोल रहे थे ना। I continued learning. मैंने कहा कि मैंने हाँ। क्लास जाना बंद कर दिया लेकिन इंग्लिश सीखना बंद नहीं किया। तो इंग्लिश फिर से अब कर लेंगे, जो जो वर्ड्स हमको रखना है रखते चले जाएंगे। आता है हमें रखना वर्ड्स, रखिए। I stopped going class. I But stopped I going to didn't- class. Going to the class by I didn't I didn't stop learning English. I didn't start. I didn't stop learning. But I didn't English. stop learning. But I didn't stop learning. क्या सीख रहे हैं दोस्त, क्या सीख रहे हैं? गौर करें, what are we learning? गौर कर रहे हैं? यहाँ पर दो चीजें, एक स्टॉप के बाद क्या लिखा है, प्लेइंग। एक कंटिन्यू के बाद क्या लिखा है, टू रिकॉर्ड। तो हम अगर कंटिन्यू बोलना चाहेंगे तो इस तरह से बोलेंगे। अगर मैंने कहा मैंने उसके बारे में सोचना, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया लेकिन मैं उसके बारे में सोचती रही या नहीं सोचता रहा, तो कंटिन्यू बोल देंगे। जब हम कंटिन्यू बोलेंगे तो आईएनजी नहीं लगेगा क्या? यहाँ देखो, जो सामने है वो देखो, सामने क्या लिखा है, कंटिन्यू के बाद क्या लिखा है मेरे बच्चे, यहाँ देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ। रिकॉर्ड। टू रिकॉर्ड। To इससे record. सीखने को मिलेगा हम लोग को, अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना तो सीखने को मिलेगा हमें। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
देखो यहाँ क्या लिखा है, कंटिन्यू टू रिकॉर्ड, और यहाँ देखना Stop playing. Stopped playing. स्टॉप प्लेइंग। तो हमें यहाँ से मैसेज लेना चाहिए कि इसका इस वर्ब के बाद ये, इस वर्ब के बाद ये, यहां से लेना चाहिए मैसेज। जो भी आप सुने, जो भी पढ़े, उससे मैसेज लीजिए, सीखिए दोस्तों। कम ऑन, समझ में आए कुछ बात? बोलो। वो मेरे को फोन करता रहा, कंटिन्यू यूज करो। They continue. He continued He continued to calling calling. Calling to me. call me. Call बोलना me. चाहिए। Called me. Continue to He call me. continued Call called me. me. He continued to Continue calling to me. call me. He continued to They call me. continue I to call me. didn't Continued to call me. received her call. ठीक है, फिर Receiving बोलिए her call. उसने कॉल करना बंद कर दिया। अब ये बोलिए। Huh? Come again, sir. Stop it. They stopped calling. He stopped calling Is me. me. Stop calling me. Stop calling. अच्छा चलो, सब लोग को मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में यूज करेंगे, चैट बॉक्स। ओके एवरीबॉडी, चैट बॉक्स। उसके बाद प्रैक्टिस, क्योंकि ये समझ बहुत जरूरी है आगे के लिए। मैं समझाना चाहता हूँ कुछ खास पॉइंट। जब भी आपके सामने इंग्लिश सेंटेंसेस आएंगे, तो जो वर्ब के बाद की कहानी है ना, उस पर ध्यान देना। और वो फिक्स्ड है कि ऐसे ही होता है। जैसे स्टॉप के बाद प्लेइंग लिखा है ना, तो मैसेज है हमारे दिमाग को कि स्टॉप के बाद हम कोई भी वर्ब बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे? आईएनजी फॉर्म में बोलेंगे। कंटिन्यू के बाद हमारे सामने टू रिकॉर्ड लिखा है, ये मैसेज है। अगर हम कंटिन्यू बोलेंगे तो उसके बाद 2+V1 बोलेंगे। अब ये बात, मैसेज लेने के बाद हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे। यहां बीटल ने खेलना बंद कर दिया, मैं बोलूं मेरे पापा ने दारू पीना बंद कर दिया, कैसे बोलेंगे? माई फादर स्टॉप्ड ड्रिंकिंग बोले कि टू ड्रिंक बोले, आप डिसाइड करें चैट बॉक्स में। माई फादर स्टॉप, स्टॉप भी लिखिएगा, उसके बाद आगे क्या लिखना है आप मुझे बताएं। यूज द चैट बॉक्स पीपल। आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट इट्स इंपॉर्टेंट। चैट बॉक्स यूज कर ले थोड़ा। ओके ओके, माई फादर स्टॉप ड्रिंकिंग बियर, माई फादर स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन। ये चीज कैसे आपको पता चल गई? यहां से, है ना? मेरे पापा ने दारू पीना बंद नहीं किया, कंटिन्यू वर्ब यूज करके बताइए। डॉक्टर ने मना किया लेकिन वो बंद नहीं किए, माई फादर कंटिन्यूड। माज आप गलत लिख दिए बेटा, माज बेटा गलत लिख दिया आप। माज हैज रिटन स्टॉप टू ड्रिंक। ओके, उतने गौर नहीं किया वहां पे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप लोग बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई हैव अ सजेशन। You guys can use the chat, instead of chat box you can use the telegram group as well. Okay everyone, telegram group में भी आप लिख सकते हैं, that would be even better because सब एक दूसरे का देख सकते हैं। okay Uzma, my father continued to drink, continued to drink। ठीक है, अब आप बोलना चाहते हैं मैं उससे बात करती रही या मैं उससे बात करता रहा। आप दोनों चीज यूज करके बताएं, कंटिन्यू से भी बोले और स्टॉप से भी बोले। स्टॉप में नेगेटिव करके बोल सकते हैं ना, मैं उससे बात करता रहा। आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, कंटिन्यू से भी बोल सकते हैं और स्टॉप से भी बोल सकते हैं। स्टॉप में नेगेटिव करके बोलेंगे कि मैंने बात करना बंद किया। संयुक्ता मैम गुड जॉब, काशिफ गुड जॉब, एवरीबॉडी गुड जॉब। अरशद इरशाद बहुत अच्छा है, सैयद इरशाद अशरफ वेल डन। अच्छा, क्या ये 2 वर्ड्स तक की कहानी है खाली स्टॉप और कंटिन्यू, कि आगे हर जगह ये सब चीज हम लोग अब गौर करेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन नाउ। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां जो लिखा है उसको ध्यान से देख के सीखना पर्पस रहना चाहिए हमें। मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप दोनों बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी बोलते गलत नहीं होता, लेकिन यहां नहीं लिखा था ना, तो आपको यहां से सीखने के लिए मैंने ये करवाया। ये नहीं था कि आपने कंटिन्यू रिकॉर्डिंग बोला तो गलत था।
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आपको कि कर लो, दोनों में से कुछ भी लिख लो, बट आपको सीखना है जो लिखा है वैसे ही। चलो आगे दिखाता हूं। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, ओके। आपको जहां मुश्किल होगी, यू विल रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू विल टॉक, ओके। I continued to talk. I kept talking to him. Very good, very good, very good. आगे देखते बेटा. They continued to record songs. And in 1967, they made the album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. In 1967, they made the album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. What is this Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? It is the name of the album, right? It is the name of the album. Okay. Well done, Kakashabad Bache. Well done. Okay. This is the name of the album. And when did they make this album? They made this album in 1967. Padna sentence. They made the album this in 1967. The last album they recorded together was Abbey Road. यहाँ was को connect करो यहाँ से बेटा. The last album was Abbey Road. The last album was Abbey Road. अब last album के बारे में कुछ extra बता दिया. The last album they recorded together was Abbey Road. The last album was Abbey Road. Some of you guys wrote beautiful sentences, okay? The last movie I watched was this. The last chicken I ate was 2 months ago. Last night, okay, like this. Next. The last match India played was against Australia. The last match India played was against Australia. Okay, people. जॉन लेनन मैरिड, देखना जॉन लेनन ने शादी कर ली, किससे कर ली? योको ओनो से कर ली. जॉन लेनन मैरिड योको ओनो. जॉन लेनन ने योको ओनो से शादी कर ली. से के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है. देखो दोस्तों, जॉन लेनन मैरिड योको ओनो. अच्छा हिंदी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? ठीक है. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? से के लिए कोई जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है. अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. इंग्लिश पे ध्यान दीजिए. तो मैरी, शाहरुख खान ने गौरी से शादी कर ली. शाहरुख खान मैरिड गौरी. Shahrukh Khan married Gauri, right? What is his name? You know, Katrina's husband. Katrina's husband, guys. Vicky Kaushal. आप कैसे बोलेंगे? विकी कौशल ने कटरीना से शादी कर ली. विकी कौशल मैरिड कटरीना कैफ. ठीक है. मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा. आई विल, ऐसा अटक नहीं करना. मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा. आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू. आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू. और जिस तरह से सहयोगिता मैम है, अंशु है, आप लोग के लिप्स रीड कर सकता हूं मैं, आप जो बोल रहे हो. भले ही आवाज नहीं आ रही, बट आई कैन रीड योर लिप्स. I can read your lips on my fingertips. कौन सा एडवर्टीजमेंट है? 5 स्टार? I don't know. Cadbury's, I think. Yeah, I think it's Cadbury's advertisement. Yeah. I can read your lips on my fingertips. Yeah. Okay. तो दोस्तों, John Lennon married the artist Yoko Ono. The artist Yoko Ono. An artist नहीं लिखे, the artist क्यों लिखा, ये समझाता हूं. Okay. An artist Yoko Ono, the artist Yoko Ono. An artist में हम आपको बता रहे हैं कि योको ओनो एक आर्टिस्ट है. John Lennon married an artist Yoko Ono.
लेकिन दी आर्टिस्ट में लिखने वाला बता नहीं रहा है, लिखने वाला सोचता है, आप जानते होंगे जॉन लेनन मैरिड द आर्टिस्ट योको ओनो, और वो जो आर्टिस्ट योको ओनो थी ना, उससे उन्होंने शादी कर ली। वो बता नहीं रहा कि एक आर्टिस्ट थी, लेकिन अगर आप एन आर्टिस्ट लिखोगे तो लिखने वाला बता रहा है आपको, जॉन लेनन मैरिड द आर्टिस्ट योको ओनो। ओके ओके, योको ओनो फेमस रही होंगी? यस, शी वॉज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। ओके, so that's why John Lennon married the artist Yoko Ono in 1969. बोली मेरे पापा ने मेरी मम्मी से शादी करी 1983 में। My father married my mother in 1983. Anish, my father married my mother in 1983. दूसरा तरीका, my father and mother married in 1983. एक और तरीका, my father and mother got married in 1983. Okay. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। I will not marry you. I will not marry you. I will not marry you. Okay, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। I will not marry you. मेरा भाई आपसे शादी नहीं करेगा। My brother will not marry you. Okay. क्या तुम अपने टीचर से शादी करोगे? Will you marry? कहां से आया? अभी मैंने जानबूझकर किया था और ये फंस गया लड़का बगल में, ये विद लगा दिया। अभी तक हम लोग कर रहे थे शाहरुख खान मैरिड इस गौरी, सब करवा लिया। उसके बाद मैंने कहा क्या तुम अपने टीचर के साथ शादी करोगे? तो विद लगा दिया। विल यू मैरी योर टीचर? विल यू मैरी योर टीचर? बोलो नहीं, कभी नहीं, हम अपने टीचर से कभी शादी नहीं करेंगे। आई विल नेवर मैरी माई टीचर बिकॉज माई टीचर इज यंगर देन मी, कि मेरे टीचर मेरे से कम उम्र की है। राइट, ओके, जोक बन गया वो। सॉरी सॉरी अबाउट दैट, जस्ट अ सेकंड। John Lennon married the artist Yoko Ono in 1969, and in 1970 the Beatles broke up. In 1970 the Beatles broke up, guys. See, the girl came, the family broke. In 1969 he married Yoko Ono. John Lennon married Yoko Ono, and next year in 1970 the Beatles broke up. You know, the wives starts telling, अरे तुम ही तो सब जो हो करते हो, बाकी सब तो बैठ के खाता है. So he said, okay, fine, I don't need the band, and the Beatles broke up. आपने breakup सुना है ना? Breakup, B2, broke up. So the thing is, breakup खाली relationship में नहीं होते. You know, organizations also break up, groups break up, families break up. Okay, so they disintegrate, they separate. Yes. In 1970, the Beatles broke up. So the Beatles were for 10 years, from 1960 to 1970. The Beatles lasted 10 years. The Beatles lasted, मतलब चला, last मतलब चलना, पहले सीखा होगा, ठीक है? The Beatles lasted 10 years. 10 साल चला Beatles. John and Yoko moved to New York. John and Yoko Ono moved to New York. वो लोग न्यूयॉर्क चले गए रहने. They moved to New York. Okay, मतलब परमानेंट टाइप से. They moved to New York. Not went to New York. Moved to New York. Went to New York खाली जाना है. Moved to New York means वहां रहने लगे. They moved to New York. John wrote and sang. Wrote, V2 of write. John wrote and sang. Sang is the V2 of sing. John wrote and sang his most famous song, Imagine, in 1971. John wrote and sang his most famous song, Imagine, in 1971, everybody. He wrote and sang his most famous song. मेरी सबसे
नजदीकी दोस्त, my closest friend, my closest friend. Okay. मेरी सबसे प्यारी चीज, हाँ बताएंगे, my most favorite thing. All right, my most favorite thing, most favorite. Okay. He wrote and sang his most famous song, Imagine, in 1971. इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? When did John write and sing? तिकड़ी. When did John write and sing his most famous song, Imagine? The answer is he wrote and sang his most famous song, Imagine, in 1971. In 1980, he recorded a new album, Double Fantasy. In 1980, he recorded a new album, Double Fantasy. In 1980. Now, 1980 में, in 1980, he recorded a new album, Double Fantasy. He recorded, subject plus V2. He recorded a new album, Double Fantasy. What is a fantasy? A fantasy is a dream which will not come true. Okay. For example, when you were a child, you had a dream someday you will go on to the moon. That was your fantasy. Okay. Some children look at birds and they think they can fly too. They imagine that. Okay. So that is a child's fantasy, to fly. Flying is a common fantasy for kids, okay? And kids also have a dream that one day they will be in a chocolate factory and the door will be locked from the outside and they will spend the whole day in the chocolate factory. So that is also a fantasy. Do you think these things happen? These things don't happen, okay? So fantasy is those dreams, those desires which are unlikely to come true. They will not come true. Sach nahi honge. They will not come true. Sach nahi honge. They are called fantasies. Now, mujhe batao, when you guys were a child, what was your fantasy? Okay. Now, when you grow up, when you become grown up, okay, when you are 20, 25, then your fantasies are the same, chocolate fantasies, or your chocolate fantasies change. Now your fantasies are different. Okay, you imagine yourself on an island with Katrina Kaif, right? Nobody else, you and Katrina. That's your fantasy. So fantasies change, you know. Okay, Katrina is also, think of Disha Patani and you on an island with nobody. That is also a fantasy, okay? और उसी में दिशा पटानी के साथ साथ नोरा फतेही भी आ जाए तो डबल फैंटेसी हो गई, ओके? सो गाइस, एक फ्रेज सुनना, डार्क फैंटेसी. देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड डार्क फैंटेसी. नाउ बताइए, डार्क फैंटेसी सुन के क्या लगता है? बच्चे वाली फैंटेसी या बड़ों वाली फैंटेसी? डार्क फैंटेसी क्या? बड़ों वाली फैंटेसी, ऑफ कोर्स. तो डू यू वांट टू शेयर dark fantasies of yours in the class? No. Shut up. No way. Okay. Nobody is gonna share their dark fantasies in the class. Okay. So a fantasy is that kind of thing. Okay. A desire. एक मीनिंग है फैंटेसी का, और भी मीनिंग होते हैं बेटा, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है यही सोच के उसने लिखा था, तो वही वाली मीनिंग बता रहा हूं. ओके. उसके एल्बम का क्या नाम था? डबल फैंटेसी. ओके. तो obviously it must be a story of two girls, one boy, or something like that, I guess. I don't know. Anyways, please write your fantasies in the group, but ऐसे dark fantasies मत लिख देना that we feel uncomfortable reading, okay? Don't write your dark fantasies. He was killed a month later. He was killed a month later. एक महीने बाद he was killed. A month later. कब से गिनूं मैं एक महीना? जब से गया था अमेरिका तब से? नहीं. In 1980 he recorded a new album, Double Fantasy. इसके एक महीने बाद मार दिया. A month later. A month later मतलब एक महीने बाद. सुना है? Later वाला word सुनो, okay? Sentence. I got married in December 2008. I got married in December 2008.
10 months later, I had my daughter Aditi. 10 months later, आप समझ गए ना, शादी के 10 महीने बाद, 10 months later, I had my daughter. और सुनिए, sometimes students don't pay the whole fee at the beginning, okay? They pay half the fee at the time of admission. 1 month later, they pay the rest of their fee. समझ में आया? 1 month कहां से मैंने गिना? फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर एडमिशन. तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा दोस्तों, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा. चलिए बोलिए, बोलना है सर ना पहले पैसा ले लेते हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स पे ऑल द फी बिफोर एडमिशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन. Normally, students pay all the fee at the time of admission. But sometimes, some students pay half the fee at the time of admission. And they pay the rest half 1 month later. अब यहाँ 1 month later कहाँ से गिनेंगे? समझ गए ना? 1 महीने बाद हिंदी में आया था फ्रेज, तो वैसे ही. और सेंटेंसेस देता हूं, ठीक है? I was born in 1980. I was born in 1980. 2 years later, my sister was born. देख लो, 2 साल कहां से गिनेंगे हम, पता चल गया ना? मेरे बर्थ से 1980 से, राइट? I was born in 1980. 2 years later, my sister was born. तो आपको बाद के लिए आफ्टर नहीं बोलना हर बार, ओके? 2 साल बाद, 10 साल बाद, पास्ट में बात कर रहे होंगे, अब पास्ट टाइम की बात करो, पास्ट टाइम, ओके? तो कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? लेटर. जैसे अब आपको अनम्यूट करता हूं एंड आई वुड लाइक यू गाइज टू गिव मी अ कपल ऑफ सेंटेंसेस. मुझे कुछ सेंटेंसेस देना. कम ऑन एवरीबॉडी, आप में से जिसके पास सेंटेंस है वो दे सकता है लेटर वर्ड से. पास्ट के बारे में बात करना, फ्यूचर के बारे में नहीं, अभी के बारे में बात नहीं करना, प्रेजेंट में नहीं लाना लेटर, पास्ट के बारे में बात करना. हमेशा लेटर पास्ट में ही यूज होता है, ओके? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? I talk to you later. वो खाली लेटर है. मैं 2 months later, 2 years later, one day later, 2 days later, 2 hours later, ये वाले फ्रेजेस चारों आपसे, ओके गाइस? चलो देता हूं एग्जांपल, ठीक है? I borrowed some 10,000 rupees from Renu. I borrowed 10,000 rupees from Renu and I paid her back 3 days later. ठीक है दोस्तों? I paid her back 3 days later. और अंशु बहुत समझदार है, नहीं तो अभी कहती सर यू पेड ओनली 5,000 स्टिल ड्यू सर. ठीक है, वो अभी मौके पे चौका मार सकती थी, बट शी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट. ओके, सो आई borrowed 10,000 rupees from Renu and I paid her back 3 days later. मैंने जिस दिन पैसे लिए 3 दिन बाद पैसे दे दिए. I paid her back 3 days later. Okay, any problems? तो कोई भी काम करना है उसमें लेटर लगाना, हिंदी में होना चाहिए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, ओके? लेकिन ये सब पास्ट की बातें करना, प्रेजेंट की बात नहीं करना. डोंट टॉक अबाउट प्रेजेंट. हेलो, so guys, you can unmute yourself and give me an example with the word later. Samir, On chat box, sir. V2. On chat box. ना अनम्यूट कर दिया, आप लोग बोल सकते हैं, कम ऑन. My younger daughter was born in 2004. 3 years later, my elder daughter was born. उल्टा पुल्टा हो गया. उल्टा पुल्टा. अब पहले बात करेंगे पहली बेटी की, तो बड़ी बेटी, फर्स्ट डॉटर, एल्डर डॉटर, ओके? My first daughter was born in 2004. 3 years later, 3 years later, your second daughter was born. my second daughter was born. Very good. Okay. I woke up at 6 in the morning. I woke up at 6 in the morning. And half an hour later, I had breakfast. आधे घंटे बाद मैंने नाश्ता किया. 6 बजे उठी, आधे घंटे बाद नाश्ता किया. Half an hour later, I had breakfast. Okay.
So later is clear, guys. You will write a few sentences. Okay, sir. Sir, I went a tailor shop for stitches clothes. Then tailor said I will give 2 days later. इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं शबनम, ठीक है? Yes, sir. सेज वर्ड को हटा के बोलते हैं, से को हटा के बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, Yes, sir. लेटर हमें कहाँ बोलना होता है? पास्ट में। जब Past. जब जब टेलर ने कहा कि 2 दिन में वापस करता हूं, 2 दिन में दे दूंगा, तो उसने फ्यूचर के बारे में बात करती थी कि पास्ट के बारे में बात करी थी? सोचना, राइट? इसलिए हम ये सेंटेंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इसको ऐसे बोलते हैं, आई गेव माई क्लोथ्स टू द टेलर and the clothes were ready 2 days later. The clothes were ready 2 days later. 2 दिन बाद कपड़े रेडी थे। ओके, सेंड नहीं लगाना है शबनम, उसकी वजह बता दूं। मान लो मैं अभी आपसे पैसे लूं, हे मुझे 5,000 रुपए चाहिए अंशु, अंशु लेंड मी 5,000 रुपीज, ठीक है? अंशु ने कहा कब वापस करेंगे? व्हेन विल यू पे मी बैक? व्हेन विल यू पे मी बैक? मैंने कहा 3 days later। नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 3 days later किधर है? फ्यूचर। शबनम योर माइक इज नॉइज, शबनम, शबनम योर माइक इज वेरी नॉइजी। गाइस हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। फ्यूचर में लेटर नहीं बोलते बच्चा, ओके? फ्यूचर में इन से काम चल जाता है। 3 दिन में वापस कर देंगे अंशु। आई विल पे बैक इन 3 days। आई विल पे बैक इन 3 days। समझ में आई बात? I will pay back in 3 days, फ्यूचर के लिए। लेकिन पास्ट के लिए क्या बोलना होगा? 3 days later। पास्ट में अगर कोई बात निकली, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो फिर से बता देता हूं, ठीक है? I opened an account in the bank। I opened an account in the bank। मैंने बैंक में अकाउंट खोला, ओके? 3 days later there were 2 crore rupees in my account and I didn't know where that money came from। Okay, I opened an account in a bank and 3 days later, 3 दिन बाद, यानी अकाउंट खोलने से, राइट? 3 दिन बाद उसमें 1 करोड़ रुपया था। There was 1 crore rupees in that account and I had no idea, मुझे पता नहीं था, I had no idea where that money came from। पैसा आया कहां से? Okay, तो प्लीज मेक सिमिलर सेंटेंसेस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेटर से बहुत आसान है सेंटेंस बनाना। रिमेंबर, लेटर 2 days later, 2 months later, 2 years later, 5 years later, 5 days later, 5 minutes later, okay? No problems। कुछ भी टाइम लगा लेना, later, okay? And Sir, I bought a jacket on Myntra and 3 days later I returned it. very good, very good, very good. I returned it. You returned it, very good। Yes, sir. Yeah, you sent it back, you sent it Yes, back। I sent it back. 3 days later you sent it back। Okay, very good। Now everybody please practice। सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाई हैं उसकी प्रैक्टिस करना, जो हाईलाइट करी हैं। Wait, I have an idea। From now on I'm going to do this। Okay, this is highlighted, this is also highlighted। Marry somebody, okay, right? फैंटेसी, ये भी मैंने सिखाया आपको। ओके, द लास्ट एल्बम दे रिकॉर्डेड टुगेदर, ये पूरा। ओके, थोड़ी गलती है, गिव मी अ सेकंड। अरे यार, what the hell? Yeah, okay। Now he was killed a month later। Guys, he was killed। He who? John Lennon। John Lennon। John Lennon। month later। जॉन लेनन ने किसी को मारा कि किसी ने जॉन लेनन को मारा? किसी ने जॉन लेनन जॉन को लेनन जॉन को लेनन को मारा। मारा।
किसी ने जॉन लेनन को जॉन मार लेनन दिया। वॉज किल्ड। यहाँ देखना क्या क्या लिखा है, वॉज भी लिखा है और किल्ड भी लिखा है। ये किल्ड V2 है क्या? इज दिस किल्ड V2? वॉज किल्ड V2 है क्या? किल्ड V2 है क्या? किल्ड V2 है क्या? किल्ड V2 है? किल्ड V2 नहीं है, किल्ड V3 है यहाँ पे, याद रखना। कभी भी, पैसिव है। हाँ मेरी बात सुने, passive। कभी भी V2 जो है वॉज बी वर्ब के साथ नहीं आता, तो कभी ये नहीं हो सकता वॉज किल्ड। ओके, आपने यहाँ देखिए, स्टॉप के पहले वॉज देखा क्या? नहीं ना। कंटिन्यूड के पहले वॉज है क्या? मैरिड के पहले वॉज है क्या? लेकिन यहाँ ही वॉज किल्ड, क्योंकि यहाँ मैरी किसने किया? जॉन लेनन ने किया। कंटिन्यू किसने किया? दे ने किया। स्टॉप किसने किया? बीटल्स ने किया। लेकिन किल किसने किया? ही ने किया, नहीं ना। क्या जॉन लेनन ने मारा किसी को? नहीं, जॉन लेनन खुद मारे गए। जॉन लेनन वॉज किल्ड। आप मुझे बताइए, गांधी जी किल्ड या गांधी जी वॉज किल्ड? गांधी जी वॉज किल्ड। राइट, बात समझ आ रही है? गांधी जी वॉज किल्ड। यस बताओ, सर। हु किल्ड गांधी जी? हु किल्ड गांधी जी? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे किल्ड नाथुराम गांधी जी। गोडसे नाथूराम गोडसे किल्ड गांधी जी। गांधी जी। नाथूराम गोडसे किल्ड गांधी जी। गांधी जी वॉज किल्ड। गांधी जी वॉज किल्ड। Okay. India got India got independent in August 1947. Right? 5 months later, 5 months later, Gandhiji was killed. 5 months later, Gandhiji was killed. Got it, everyone? यस सर। तो गांधी जी वॉज किल्ड की हिंदी करो। मारे गए। गांधी जी वॉज किल्ड। गांधी जी मारे। गांधी जी मारे नहीं गए। नहीं, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन। गांधी जी वॉज किल्ड की हिंदी करना है सर। गांधी जी वॉज किल्ड, गांधी जी ने मारा। गांधी जी मारे गए। राइट, मारे गए। लेकिन गांधी जी ने मारा तो गांधी जी गांधी की जी गांधी जी किल किल्ड। गांधी जी की। गांधी जी killed a गांधी जी mosquito. किल्ड। गांधी जी killed a mosquito यस। and felt very bad and felt very bad, और बहुत बुरा महसूस किए। बोलिए, सही बात। फिर गांधी जी killed a mosquito and felt very bad. वेरी वेरी। गांधी जी killed a mosquito, and felt very bad. Feel कौन बुरा किया? गांधी जी felt very bad because he believed subject plus V2 दोस्तों, he believed in non-violence. यस सर। He killed a mosquito, so he felt bad because he believed in non-violence. नॉन वायलेंस। Non-violence, none नहीं, non. नॉन वायलेंस। Non-veg नहीं बोलना है दोस्तों, non-veg. नॉन वेज। Okay? हाँ. नॉन Non-stop, non-stop की non-stop. नॉन हमेशा स्टॉप। हमेशा NON, non, नन नहीं पढ़ना, NON, non. Okay? नन होती NUN, वो चर्च में पूजा पाठ करती हैं, नन्स। ओके, नन्स, अनमैरिड वुमेन। ओके, तो गाइस ही वाज किल्ड अ मंथ लेटर, वो एक महीने बाद उनका। हु किल्ड हिम? हु किल्ड हिम? नाथुराम गोडसे। No, no, no. This guy, अमेरिकन। an American, Mark American. Chapman. Mark Chapman killed him. Mark Chapman shot him. Mark Chapman शॉट हिम। Yeah. Mark Chapman shot him. Him कौन है? जॉन लेनन। जॉन लेनन John सर। Lennon. जॉन लेनन। यहाँ वॉज नहीं है ना, क्योंकि डूअर Yes. है ना, मार्क चैपमैन शॉट हिम। ओके, यस सर। लेकिन यहाँ वॉज क्यों है? बिकॉज यही मारे गए थे, इन्होंने नहीं मारा। ही वॉज। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ही वॉज किल्ड। अब मुझे बताइए, ए लेटर रोट या ए लेटर वॉज रिटन? A letter was written, sir. ए लेटर रोट, ए लेटर वॉज रिटन दोस्तों। A letter was written. तो हाँ, आप letter बोले was सर written. सब्जेक्ट P2 पढ़ाए थे आप, तो लेटर रोट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि लिखने वाला लेटर नहीं है, आदमी लिखेगा। बोलेंगे माय हेडमास्टर रोट अ लेटर, माय हेडमास्टर रोट अ लेटर, माय फादर रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। लेकिन ए लेटर, Was written. आगे भाई भाई हटाओ। लेटर वॉज रिटन, एक चिट्ठी लिखी गई। लेटर वॉज रिटन, Written. लेटर वॉज रिटन। ओके, Written. चिट्ठी लिखी गई। इसमें लिखने वाले के बारे में जिक्र नहीं है ना आगे में। A letter was written,
आगे क्या है, लेटर, इसीलिए बी वर्ब है यहाँ पे। बाकी जितना बोल रहा हूं उतना सुनिए, उतना समझिए। मुझे पता आप में से कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ चलिए, फायदे में रहिएगा। ओके, ट्रस्ट मी। ओके। ही वॉज किल्ड अ मंथ लेटर। गांधी जी वॉज किल्ड इन 1948। गांधी जी वॉज किल्ड इन 1948। ओके दोस्तों, गांधी जी मारे गए। नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया, कैसे बोलेंगे? नाथूराम किल्ड गांधी जी Killed Gandhi ji. in 1948। 1948. दोनों में वर्ब पे ध्यान देना। नाथूराम किल्ड, नाथूराम किल्ड गांधी जी, Killed. नाथूराम Gandhi. किल्ड गांधी जी। अब Gandhi. मैं आपसे पूछता हूँ, राम किल्ड रावण की राम वॉज किल्ड रावण? Ram killed Ravan. Ram killed Ravan. Ravan राम was किल्ड Ravan रावण। Ravan was killed. killed Ravan was killed by Ravan Ram. was killed. by Right? Ram. Ravan. रावण वॉज किल्ड, राम किल्ड रावण, रावण वॉज। And Ravan was Ravan killed. was killed. मेक सेंस, मेक सेंस? ये कनेक्शन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोलो। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, द टीचर वाज स्कोल्डेड द स्टूडेंट। डिसाइड करो। teacher scolded Teacher scolded, Teacher scolded the student. 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 The The teacher student was scolded scolded Student by was scolded. teacher. By the Student teacher. was scolded. The Scolded by the student was the student was scolded, the student was scolded। scolded. कनेक्शन समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. 2-3 सेंटेंस कर सकते हैं ऐसा, प्रैक्टिस ऐसा वाला। 2-3, Yes. 2-3 ज्यादा नहीं। ओके, प्रैक्टिकली। ठीक है, ऑलराइट। सो आई एम रैपिंग अप नाउ, वी विल फिनिश इट टुमारो। Sir, एंड I have a sentence. यस प्लीज मोनी। I invested 80,000 rupees in stock market, Very and good. 1 week later its value increased to 10,000. Very nice. You invested 80 8,000. 8,000. You invested 8,000 rupees in stock market, and 1 month later it became 10,000. 1 week later its value increased to 10,000. 1 week later it became 10,000 rupees. Wow, wow, wow. Very Amazing. good. In 1 week, 25% return, guys. In 1 week, 25%. Okay, the whole year will not get you 25%. In 1 week, you got 25%. Wow. So, you really like investing in stock market money? Yes, sir. Wow. Great. Keep it up. Invest more. But again, do not put more than 25% of your total wealth in the stock market. जितना भी पैसा इन्वेस्ट Yeah. करना उसका 25% लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बाकी दूसरे जगह। अदरवाइज सारे लगा दिए तो गड़बड़ हो सकता है, So guys, I will Yeah, I know. see you the day after tomorrow. I will see you tomorrow. Okay? Okay, sir. And wait. I have to, do the question answers carefully, revise, make sentences, practice hard. Tomorrow we are going to listen to the farmer and businessman and the fisherman story. Okay. Bye-bye, everybody. Take care. Thank you, sir. See ya.